हेलो गाइस, I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एफआईआर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द नोटिफिकेशन ऑन 4 मार्च 2014 रिगार्डिंग द जाट रिजर्वेशन वाज सेट असाइड। तो किस में केस में करा गया था? राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसका आंसर ए। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 रेफर्स टू एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। किससे रिलेटेड बात करता है? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन से। Which of the following is a correct about reservation in public employment? तो इससे कौन सी बात रिलेटेड सीख है कि बैकवर्ड क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड कैटेगरीज। ठीक है, कि बैकवर्ड क्लासेस कैन बी डिवाइडेड इनटू बैकवर्ड एंड द मोर बैकवर्ड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड। In which case did the Supreme Court observe that the equality of opportunity admits discrimination with reason and prohibit discrimination without reason? तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। तो इसका आंसर है ए। इन विच ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। तो इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोली गई थी बात। Which one of the following function does not require consultation with the Public Service Commission as per the provision of the Constitution of India? तो which of the following function not required consultation with the Public Service Commission or as per the provision of तो the manner in which any provision referred to the 16 subclause 4 made। 16 subclause 4 में जो method दे रखा है उसकी जरूरत नहीं है। Consider in the following statement as per the provision of Article 16 subclause 4 of the Constitution of India for getting reservation for the appointments and post under the state, a state must be a backward and should not be adequate represent in the service under the state। तो इसका आंसर है 2 only। Which of the following section of the citizen should be excluded from the benefits of the reservation according to the principles of the creamy layer as propounded by the Supreme Court in Mandal Commission judgment? तो इसका आंसर है only 1, advanced section among the other backward classes। तो इसका आंसर है ए। एडवांस सेक्शन, जो बैकवर्ड क्लास में एडवांस सेक्शंस हैं कि उनमें अमीर है बैकवर्ड में, उनको हटाया गया। आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मंडल कमीशन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द poisonous weed of casteism has been replanted where it will be trouble us thousands of years. Each age will have to be considered it. This was observed by ये बात किसने बोली थी? एन ए पालकी वाला ने। In CB Mutham Mohama versus Union of India, the Supreme Court struck down a provision in service rule requiring female employee to obtain permission of government in writing before her marriage is solemnized. Such provision discriminatory against the woman and violation of Article 16, hence unconstitutional. Yes, unconstitutional क्या कहते हैं? Both A and R true. R is the correct explanation of A. इसका आंसर A। Untouchability is abolished in the practice फॉर्म ऑफ फॉरबिडन। ये किस में बताया गया? आपका सेक्शन 17 में बताया गया। ठीक है, सेक्शन 17 में बताया गया कि आपका अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश्ड हो चुकी है, छुआछूत। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज अ क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस भी है और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो इसका आंसर है सी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इंडियन आउटलॉज अनटचेबिलिटी? तो सेक्शन 17। 12 स्टेट की बात कर रहे, 13 कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई आपका इनकंसिस्टेंट नहीं बताया, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे उससे पहले या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो। Who was the opinion of Sabrimala case? Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala writ 2006 that the essence of religion consists in practice followed by the followers of the religious denomination। तो ये किसमें बोली गई थी? आपका इंदू मल्होत्रा, जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने। इसका आंसर सी है। आर्टिकल 17 डील्स विद द अनटचेबिलिटी। कंसिडर द स्टेटमेंट। तो इससे रिलेटेड क्या कंसिडर है कि डी है, बहुत स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को डिफाइन भी नहीं करेगा। ठीक बात है। The provision of untouchability is given in the Article 17. According to the provision of the following, untouchability is abolished at
एंड एनी पर्सन प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल। द प्रोटेक्शन, तो ये क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, बिल्कुल ठीक है आपका। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है आपका। द लॉ द मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं, इससे रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट ही बना सकता है। द लॉ मेड बाय द बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन, यानी कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आपका पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकता है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। तो इसका आंसर है आपका 1214। तो सेक्शन 17 आपका डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स इवन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी ये हो सकता है। Vishakha versus State of Rajasthan justified its decision based on the multiple sources. They are CDAW, Beijing Statement of Principle of the Independence of Judiciary, Legitimate Expectation Principles. So all of this. An unlawful compulsory labor is deemed to be a practice of untouchability when any person compels other person to do. तो स्कैवेजिंग मतलब नाली साफ करना, रिमूव एनी कार्कस, जानवर को हटाना, स्वीपिंग झाड़ू पोछा करना। तो ये चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर इज डीम्ड टू बी अ प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, अगर कोई किसी से ये करवा रहा है तो ये अनलॉफुली काम करवा रहा है ये वाले किसी से, बिकॉज ये सेक्शन 17 बात करता है सर। Which one of the following is correct statement? No citizen of India shall accept a title from any foreign state. No title may be conferred by the state. कोई टाइटल आपका नहीं मिलेगा, ठीक है, unless until academic title, ठीक है। In which of the following case the Supreme Court upheld that the constitution validity of national award like Bharat Ratna, holding that these awards do not among the titles within the meaning of section 18, कि मतलब सेक्शन 18 जो बात करता है वो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, ठीक है, शर्मा, ब्राह्मण, ये आपके गुज्जर, यादव, ऐसे टाइटल्स की मना करता है, ठीक है। कोई ऐसा टाइटल लगा नहीं सकता अपने नाम से आगे, पीछे लगा सकता है, उस कास्ट की तरह यूज करेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। पर ऐसे बोला गया कि ये जैसे ये भारत रत्न लगाते ये आपका पॉपुलेशन नहीं है, बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था। फंडामेंटल फ्रीडम गिव्स अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल ओनली, किसके लिए अवेलेबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ आपका सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। एनी लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद द राइट करेंटली अंडर। तो आर्टिकल 19 को वो नहीं कर सकते, ठीक है, आप मांग नहीं सकते जब इमरजेंसी लगी हो, ठीक है। एनी लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेड बाय द स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दे आर इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ गारंटी, ठीक है। तो आर्टिकल 19 को आप नहीं मांग सकते, पर 22 को मांग सकते हो। 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। 21 मांगता है आपका कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 20 बोलता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑफेंस विच इज इंपेरेटिव शो दैट द रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। तो ये स्टैंड रिस्पेक्टफुली, स्टैंड होना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है। In which of the following case it was held that the provision of chapter 8 of CRPC being in a public interest are not violative of article 19 of constitution of India। मतलब चैप्टर 8 जो है CRPC का वो आपका वॉलेटिव नहीं है, कि किस केस में बोला गया था आपका, मधु लिम्मे वर्सेज एसडीएम मोर्नी, ठीक है, जिसमें 144 आपका वो धारा 144 लगाने की पावर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल होम ओनली ओनली ए, ठीक है, सिटीजन ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, फॉरेनर्स के पास नहीं है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देखो स्पीच का मतलब होता है बोलना, एक्सप्रेशन का मतलब होता है लिखना, गारंटेड बाय द आर्टिकल 91 इंक्लूडिंग राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है। तो ये वाली बात किसने बोली गई, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल। तो इसमें केस में बोली गई थी ए में। बीइंग अ जूरिस पर्सन अ कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, अगर एक जूरिस पर्सन की तरह देखा जाए कंपनी इज अ जूरिस पर्सन नॉट ए सिटीजन, बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द स्टेट एक्शन impairs the right of a company thereby affecting right of shareholders the protection article 19 will available to him। तो उन्हें भी होगा। तो ये किस पर, तो ये बोला गया था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो सी है इसका आंसर।
In which of the following articles Constitution of India related to the liberty of press? तो उसका आंसर है आर्टिकल 19. Part 9B of Constitution of India dealing with the cooperative society was inserted by the Constitution of 97 Amendment. ठीक है, 97 Amendment से added हुआ था. Article 19 Subclause 4 empowers the state to impose reasonable restriction on the right of freedom of association and union of interest of public order and morality or sovereign or integrity of India. इसका आंसर है A. In which of the following case the Supreme Court has held the right to fly of national flag with respect and dignity is a fundamental right for every citizen within the meaning of Article 19(1)(a) of Constitution of India. ये किसने बोली थी? Union of India versus नवीन जिंदल. C is का आंसर. Which directive principle has been elevated to the statute of fundamental rights by the inserted Article 21(a) in the Constitution 2002. तो इसमें किसमें बात करी गई थी? आर्टिकल 45 में बात करी गई थी. ठीक है, आर्टिकल 45 से रिलेटेड था. आर्टिकल 45 बात करता है आपका कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन चिल्ड्रन बिलोंग द 16 ईयर्स. राइट अंडर आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 के अंदर कौन सा राइट है आपका? अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक? ठीक है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किससे डील्स करता है आपका? फाइनेंस कमीशन से. राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडिया अवेलेबल. In which of the provision of the Indian right to free education of children among the age of up to 14 years of the state, तो किसमें बोला गया था? आर्टिकल 21A में बोला गया था कि छोटा राइट टू एजुकेशन वाली बात 21A में. फॉलोइंग इज नॉट विन द जूरिस्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो इनमें से पीछे दी गई कौन सी चीज में से आपका राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आता? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है उसके अंदर. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं, पर राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं आता. क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है. ठीक है, प्राइवेट चीज नहीं आती. तो ओनली 2. तो सी है. Where any information sought under the Right to Information Act concern the life of or liberty of a person, the same shall be provided within the receipt of the request. When any information sought कोई right life and liberty से related है, तो information कितने दिनों में देनी पड़ेगी? 48 hours में देनी पड़ेगी from the date of receipt. ठीक है, अगर कोई चीज आपका लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स में देनी पड़ेगी. तो इसका आंसर है डी. Which one of the following is not a ground to on which reasonable restriction on the right to freedom of speech and expression can be imposed? तो इसका आंसर है पब्लिक मोरालिटी. तो इसका आंसर है प्रॉब्लम. Which one of the following is a ground on which the state can impose reasonable restriction on the right to move freely throughout the territory of India? तो इसका आंसर प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इसका आंसर है डी. Which one of the following statement is correct? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है? No person can be subject to narco analyst test against his wishes. किसी भी पर्सन के लिए नो पर्सन कैन बी सब्जेक्ट टू नार्को एनालिसिस टेस्ट अगेंस्ट हिज विशेस. उसका नार्को एनालिसिस नहीं हो सकता. इसका आंसर है ए. In which of the following case the 5 judges constitution bench observed that the doctrine of the postponement was aimed at balancing the right of an accused to be presumed innocent till completion of trial with the media's right to freedom on expression. तो उसमें बोला गया था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेटिव वर्सेस अदर्स एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड. इसका आंसर है बी. At a time bar debit or directive principle of state policy under the Constitution of India are example of imperfect rights. तो ये बात करता है imperfect right. Right to personal liberty includes includes करता है custodial violation, right to under trial and separate them become convicted, right against public hanging. तो all of them. इसका आंसर है all of them. The fundamental right to form cooperative society is provided under किस में बताया गया? 19(1)(c) में बताया गया. ठीक है, 19(1)(c) में बताया गया. 19(1)(c) में. Which one of the following under mentioned right is guaranteed
to citizen of right to freedom आर्टिकल 19, तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो ये चीज हो सकती है, ठीक है, राइट टू असेंबल हो सकता है पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो ये a state government guaranteed license to certain private operation to run a state of carriage and contract carriage. The state carriage could run only from the one fixed point to another with a fixed point passenger without any right to pick up passenger in not no such restriction were imposed on the contract carriage. It were required to pay high rates. Operation contract carriage operation, the contract carriage operation challenge the discriminatory nature of the tax imposed in respect of this operation. Carriage का आंसर है आपका the tax is valid, there is a reasonable classification between stage and, तो B है इसका आंसर. The Supreme Court has held that the right to fly of national flag, respect of dignity and a fundamental right. जिंदल वाले केस में बोला था, नवीन जिंदल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल वाले केस में था. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19(3) कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या है, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी करता है प्रोवाइड आपको कि आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, प्री बार्गेनिंग टाइप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये 19(1)(c) बात करता है, 19(1)(c). Which one of the following is not a fundamental right, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक. The three Supreme Court justices who were suspended in 1973 were the three Supreme Court judges who were suspended from 1973. कौन से तीन जजेस सस्पेंडेड करे गए थे, जस्टिस J.M. शहलत, जस्टिस A.N. ग्रोवर, जस्टिस K.S. हेगड़े, ठीक है, इनको सस्पेंडेड कर दिया गया था. अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था. Which of the following can claim Article 19 of Constitution, तो क्या क्लेम कर सकता है, who claim Article 19, और अब ऑब्वियसली बात है ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया. Which article of Constitution Indian guarantees citizen to right to settle any part of territory of India, तो इसका आंसर है आर्टिकल 19(1). 19(1)(e) कहता है आपका कि आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो. आर्टिकल 19(1)(c) of Constitution Indian guarantee freedoms due to form association of union cooperative society, ठीक है, ये बात करता है आपका. Which one of following case related to anti-strike verdict, anti-strike verdict से related किया KN राजन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ईयर 2003, तो इसका आंसर है ए. The fundamental rights guarantee under article 19(1) it does not include, इसमें क्या इंक्लूड है, राइट टू कॉल और इन्फोर्स बंद, ठीक है, इसमें बंद का आप ऐलान कर सकते हैं. राइट टू एंटरटेनमेंट हैज बीन, राइट टू एंटरटेनमेंट हैज बीन क्या, guarantee article 19(1)(a) of Indian Constitution. Article 19(1)(a) guarantee freedom of speech and expression to all citizens of India. Article 19(1)(a) Constitution of India, all citizens shall have a right, क्या right है, to freedom of speech and expression. Which one among the following is not a ground to restrict freedom of speech, तो इसका आंसर है law and order. In which case the Supreme Court observed that there is a no fundamental right to strike, तो किस में बोला गया था आपका, टी.के. राघारंजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सी. Which one of the following is not a fundamental duty according to the Indian Constitution, to give liberty to fellow citizen, to give liberty to fellow citizen, तो इसका आंसर है टी. खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1963 Supreme Court in a case is a case of constitution of, ये किस खड़क सिंह वर्सेस रिलेटेड, पुलिस सर्विलांस से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है बी. The number of recognized category of fundamental rights in Indian constitutions are 6. 6 fundamental rights है. Applying aforesaid test will such act violation of fundamental rights to freedom of speech and expression, it violate article 19(1)(a), तो ये 19(1)(a) की बात कर रहा है, इसका आंसर ए है. In commercial speech part of freedom of speech and expression, ये in commercial speech part of freedom of speech and expression, ये किसमें बताया गया आपका, commercial speech is a part of the
freedom of speech and uh, expression guaranteed under Article 91A of the Constitution. तो इसका आंसर है C. Will the state be successful in its defense that the action is taken under the interest of general public? Yes, because newspaper price and page control is the interest of general public. In Maneka Gandhi case, it was observed that the right to go abroad within the ambit of Article 91A, but the configuration of password is not according to the law. But जो configuration होगी जो जब्त होगा password is not according with the law. हाँ, कि जो मेनका गांधी जी का वो करा गया था, क्या कहते हैं, पासपोर्ट जब्त करा गया था, वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करा गया था. Restriction may not be imposed on freedom provided Article 91A on the ground of sedition. Right to guarantee to citizen only is a Article 91A. Right to information is a essence part of Article 91A. The freedom of press in India is a implied in right of freedom of expression. तो उसका आंसर है सी. Which fundamental right is available to citizen only? तो आपका freedom of speech and expression. बाकी इक्वालिटी भी मिलेगा, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन भी मिलेगा, लाइफ एंड लिबर्टी से भी. The number of categories of freedom of granted in 6A. The state can make any law imposing reasonable restriction on the right of citizen to form association in the interest of sovereignty and integrity of India. This answer is A. Provision of cooperative society has been added in the Constitution of 97 Amendment Act 2000. Cooperative society has been added. आपका 97 Amendment में ऐड करा गया था, से करा गया था. Right of a citizen to carry any occupation, trade or business is ये क्या राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? इसका आंसर सी. Which one of the fundamental rights was amended in 97 Constitution Amendment Act which got the president assents on 12 जनवरी 2012? तो इसका आंसर है राइट टू फ्रीडम, बी. Which of the following articles of the Constitution provide protection of right to freedom of speech? Article 19A. Freedom of speech and expression may be subject to reasonable restriction imposed by the law on the ground of किस ग्राउंड पे बोला गया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेस पे लग सकता है. imposed by the law on the ground of contempt of court. Which of the following fundamental rights enforceable against private individuals? तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हिसाब से कौन सा राइट होना चाहिए? आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 23 and 3, आर्टिकल 24. तो ये तीन राइट है, सी है इसका आंसर. The Constitution protection Article 21 protect the right of a person of the free and fair trial in the law. Valid restriction operative on the right to free speech under Article 19(1)(a) by the virtue of force or being constitutional provision in which of the following case the first observation made by the Supreme Court? तो सारा इंडिया रियल एस्टेट वर्सेस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड. तो इसका आंसर है ए. स्टेट में क्रिएट अ मोनोपोली कंप्लीट ऑन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19(1)(g). ठीक है, आर्टिकल 19(1)(g). Procedure established by law under Article 21 would have the same effect as the due process of law. This establishment under Maneka Gandhi versus Union of India passport. जिसका आंसर है सी. Right to information is related to which article of Indian Constitution? जिसका आंसर है आर्टिकल 19. The word reasonable were added on the clause to Article 19 of Constitution of India through फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा था. द पुलिसमैन इज अ स्टेट formed one association with the member representing all traders. The government amendment amended the rules allowing the formation of association with the member belonging to only one order of each association to challenge the validity of amendment rules. With regards above, which one of the following is correct? तो इसका आंसर the amendment rule is valid as it impose on reasonable restriction on right to confer Article 19(1)(c). C is the answer. The government imposed a ban on television channel broadcasting news, sense and stories on communal rights.
The ban is challenged. Which of the following is correct? The ban is valid and the restrictions saved by the clause 19 सब clause 2 19 के सब clause 2 में restrictions के बारे में दे रखा है, तो बैन सही लगाया. MSM Sharma versus Shri Krishna Sinha AIR is a primary case related to the parliament privilege. तो इसका आंसर है C. An executive action take during national emergency in violation of Article 19 of Constitution. तो यह कैन नॉट बी चैलेंज एट ऑल, तो चैलेंज नहीं करा जा सकता. इसका आंसर है सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू नो इट्स करेक्ट? राइट टू नो इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है ए. Which one of the following is not expressly covered as a fundamental right under the Constitution of India? तो इसका आंसर है to freedom of press. तो इसका आंसर है सी. The directive principles of state policy contained in Constitution of India are relevant in determining limit as a reasonable restriction laid down in Article 19 dealing with the fundamental rights to freedom. The fundamental rights in Part 3 of Constitution have been suspended by the directive principle. A is true but R is false. This answer C. On which of the following freedom can reasonable restrictions be imposed on the ground of security of the state? So speech and expression. A pamphlet invoking reader to join the total and violent struggle to bring about a revolution. The author is prosecuted under Section 124 of sedition charges. The penal provision proceeding under challenge by the author violative this fundamental rights to freedom of speech and expression is the challenge legally tentable. ये वाली बात बताई गई है. No, because the provision is valid as it reasonable restriction on the freedom of speech and expression in the interest of sovereignty integrity of India. तो इसका आंसर है D. In accordance with the text of the Constitution as a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to freedom of speech and expression. तो इसका आंसर A है. In which of the following case constitutional validity section 27 of Indian Evidence Act was challenged for the violation of Article 23 of Constitution? 27 violation माना गया. The state of Bombay versus Kathi Kallu. Order for so orchid principle is related to double jeopardy. तो इसका आंसर है B. Which provision of Constitution recognize the accused remain silent? तो accused remain silent आपका Article 20 बताता था. Which one of the following is the correct sequence of protection in respect of conviction for the offence? तो इसका आंसर है ex post facto penal law double jeopardy self crimination. Which provision Article 20 का सब क्लॉज 2 तो बात कर रहा है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो ये बात करता है डबल jeopardy की. That no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself is an fundamental right. तो उसका आंसर है C. In which of the following case did the Supreme Court hold that the compelling a person to give his specimen writing will not amount to testimonial compulsion for the purpose of Article 23? तो उसका आंसर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू. Which of the following is not an essential for the application of double jeopardy rule? तो इसका आंसर है all the above are essential for the application of double jeopardy. क्या क्या essential है? The person must be accused होना चाहिए. The proceeding or prosecution must have taken place before a court or judicial tribunal. The person must have been prosecuted or published in the previous proceeding, and the offence must be the same for which he has been prosecuted and punished with the previous proceeding. तो ये सब होना चाहिए. Freedom of protection for double jeopardy means इसका मतलब है no person shall be prosecuted and punished for the same at once. तो इसका आंसर ये है. The judgment of the Supreme Court Ratan Lal versus State of Punjab by the application of clause 1 clause 1 of Article 20 of Constitution of India held that the said clause prevent the restorative operation of. उसका आंसर है only those criminal law which are against the interest of accused. No person shall be twice punished for the same offence incorporated. तो इसका आंसर है Article 20 sub clause 2. The fundamental rule of criminal jurisprudence regarding self-incrimination has been
given Constitution statute Article 20 sub clause 3 of Constitution of India, it is a क्या है आपका 1 2 and 4 1 2 and 4 क्या a right to refuse brain mapping test, not to protection against the giving specimen signature and thumb impression, a protection up to a person against giving evidence against himself. तो इसका आंसर है B. Which of the following articles Constitution related to the doctrine? If a person is tried and acquitted or convicted for the offence, he cannot be tried against the same offence. तो इसका आंसर है आर्टिकल 20 सब क्लोज 2. An accused person cannot be compelled to give a thumb impression. An accused person cannot be compelled to give a witness against himself. तो इसका आंसर both A is false but R is true. तो इसका आंसर है C. A person Y is convicted for the offence of kidnapping in 1960, sentenced to 3 years imprisonment. On the release from the Tihar jail, he is apprehended and detained for the commission of murder and tried and convicted and sentenced of life imprisonment in 1990. This is a violation of article. तो नो, ये violation नहीं है. सेम ऑफेंस के लिए थोड़ा डाला था दोबारा. अगला क्वेश्चन है हमारा which one among of the following statement is correct? इसमें से कौन सी? No one can be subjected to narcotic analysis without his consent. The prohibition against prosecution and punishment for the same offence more than once is. This answer is contained in the Constitution of India. तो C है. Which of the following is not covered under Article 20 of Constitution of India? तो इसमें क्या covered नहीं है? Prevention, detention. Protection in respect of conviction offence is the essence which of the following article? तो Article 20. Which one of the following fundamental rights cannot be suspended when the proclaimed emergency is emergency में कौन से आपके right बंद नहीं होते? 20 और 21. Right to 20 मतलब आपका है protection of conviction of offence or article personal liberty. Doctrine of double jeopardy is enshrined in which of the Constitution? तो 22 में, 20 के सब क्लॉज 2 में. There is no fundamental rights to pollution for free environment. The judiciary read right to pollution free environment more specifically into a particular किस केस में बताया गया था? आर्टिकल 21 में. तो इसका आंसर डी है. जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1973 established the award for the sentence is आर्टिकल 21 नॉट वायलेटिव आर्टिकल. मतलब ये बताया गया था जिसमें कि आपका डेथ सेंटेंस जो है वो वायलेटिव नहीं करता आर्टिकल 21 को. ठीक है. Which one of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? The procedure that is arbitrary and oppressive is not a valid procedure. तो इसका आंसर है B. The protection of Article 22 or 20 sub clause 3 is not available to. किसके लिए अवेलेबल नहीं है? Confession of guilt made to friend who visit the accused is in police custody is not available. इसके लिए अवेलेबल नहीं है. Right against self-incrimination includes right not to answer a question exposing on oneself to confession. मतलब कन्फेशन में आप वो आंसर ना दो तो भी चलेगा जो आपको खुद फंसा सकते हैं. आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका किसके लिए करता है? क्रिमिनल लायबिलिटी से. विच ऑफ द करेक्ट लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 20 का सब क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. दिस कंस्पिरेसी in which case the Supreme Court of India held that the polygraphy test conducted under the compulsion is a violative of Article 20 of Clause 3 of Constitution. तो इसका आंसर है Selvi versus State of Karnataka. तो A. The doctrine against self-incrimination under Article 20 of Clause 3 runs to the state that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself with regard to our response. तो ये इसका आंसर है. Protection is against the statement made under compulsion. तो इसका आंसर B. Double jeopardy means double jeopardy का मतलब क्या है? No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. तो इसका आंसर है D. Selvi versus State of Karnataka 2000 is a case related with right against self-incrimination. तो C है इसका आंसर. Which of the following articles of Indian Constitution recognize the doctrine of double jeopardy? तो इसका आंसर है आर्टिकल
20 sub clause 2. Article 20 sub clause 2 of Indian Constitution provide protection against. आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 बात करता है आपका डबल जीओ पार्टी की narco analysis, pornography test, and brain electric activation profile test are conducted against will of the person subject to test violation of Article 20 sub clause 3 and right to personal liberty protection under 21 of Constitution of India was held by the Supreme Court, which case में ये हुआ था Salvi versus other state of Karnataka DS का. Article sub clause 3 state that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself. This is the case of narcotic analysis. Answer A. As per decision of the Supreme Court of India in the case of Salvi versus State of Karnataka, compulsory use of narcotic acid test and brain mapping and pornography test violates Article 20 sub clause 3. Thus answer है A. The Supreme Court of India Salvi versus State of Karnataka had held that the compulsory administration of narcotic analysis technically amounts to testimonial compulsion and thereby that triggers to protection of Article to B as answer. Consider the following statement regarding the protection aspect of conviction for the offence. Thus answer at 2 and 3. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once, or no person accused of an offence shall be compelled to the witness against himself. Thus answer is C.